Next in line, we have the last and the final presentation for the day. We begin with the panel discussion. I would like to invite on stage our moderator, Dr. 𝗟𝗶𝗸𝗲, Principal and National Awardee, author, Kuwars Global School, Lucknow. The panelists for the session are Shalini Tiwari, Principal, St. Xavier's Convent School, Lucknow; Ritu Singh, Principal, G.D. Goenka Public School, Panipat; Hema Kalakoti, Principal, APS Academy, Lucknow; Brijesh Kumar Pathak, Principal, Bansraj Memorial Sunrise Public School, Shahganj, Jaunpur; Promini Chopra, Principal, 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲 School, Gomti Nagar, Lucknow; Anurag Singh Rathod, Academic Resource Person, Basic Education Department, Lucknow; Madhurima Srivastava, Assistant Teacher, Upper Primary School, Sheetalpurva, BKT, Lucknow; Aarti Avasthi, GM, Academic, State Anandram 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲 School, Ghaziabad; Rajiv Kumar Singh, State Resource Group Member, UP Basic Education, Lucknow; Kapish Saraf, CEO and Director, KidX. The topic for the panel discussion is Inculcating New Learning Techniques with Existing Pedagogies and Curricula. Over to you, Mr. 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲. Before we begin with the panel discussion, can we have Mr. 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲 once again on stage? Can we have Mr. 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲 on stage to collect his memento, please? Okay. Certainly, Mike. Please, sir. I would request Dr. 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲 to felicitate Mr. 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲𝗲. Thank you so much, sir. Huge round of applause, ladies and gentlemen. Over to you, Dr. 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲. Okay. Hello. Well, good evening, everyone. And being the last session, and also when we wait for the lunch, there's always a hurry. And when we think of the end of the day, there's again a hurry. So I'll just take a minute to adjust. Well, the session today talks about a priority towards inculcating the new learning techniques with existing pedagogy and the curricula. Well, friends, looking forward post-COVID, we have had so many challenges, and they were very well incorporated in that particular scenario of bringing out a win-win approach in our schools. Thanks to the boards, CBSE, state government, and of course, the international schools, we could cooperate well and, of course, come up with the idea of generating a presence felt with a win-win approach. I take this opportunity to welcome our panelists today, Mrs. Hema Kalakoti, ma'am. She is the principal at APS Academy, Lucknow. We have Ms. Promini Chopra, principal, 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲𝗲 Gomti Nagar. Then we have Mr. Anurag Singh Rathod, Academic Resource Person with the Basic Education Department in Lucknow. Then we have Mrs. Madhurima Srivastava, Assistant Teacher, Upper Primary School, 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲𝗲 Talab, Lucknow. Then we have Mrs. Aarti Avasthi, ma'am. She is the GM Academics with the St. Anandram 𝗟𝗶𝗸𝗲𝗲 School, Ghaziabad. We also have Mr. Rajiv Kumar Singh. Namaskar, sir. State Resource Group Member, UP Basic Education, Lucknow. And finally, we have Mr. Kapish Saraf, CEO, Director, KidX. So great to have a mixed bag of corporate as well as the academicians. The learning begins with the say that lessons learned from experience during the pandemic and the roadmap ahead we have gone through. We have crossed that academic channel with the march of time. And now there is a need of impact of game-based learning. We always tell them not to use mobiles
Of course, now, like in my school, we are going to have half-yearly exams from Monday. We have given a say to the parents, please limit the use of digital devices. There was a time when that was the savior, but now we have to change our wearing hats as per the situation. And it's high time we limit them with the gamification. Need for personalized and inclusive learning spaces. So these are the 3 discussion points we'll be dealing with. Coming to the new learning pedagogy, the smartness, I would request Ma'am Hema to put her points across on the requisite. A class teacher has to have, or a subject teacher has to have, post-COVID to come back to the normal, into the threshold of academic learning without the digital platform. So my request to you, ma'am, to explain the scenario, what has to be there in the class post-COVID now to bring back to them to the class. Good evening, everyone. Thank you, sir. Post-COVID, there are so many things we have to learn what we had earlier. Now, post-COVID, there are many challenges. One challenge is the children now we are dealing, they're very sensitive. There are learning gaps in them. So accordingly, we have to equip ourselves. We have to plan our lessons, our teaching in the classroom, the strategies, methodologies that has to be changed as per the need of the child, as per his or her abilities. And if we are able to do that, because earlier the children who are coming to us, they were both inside and outside. They were, balanced. They were in activities which were outside the classrooms also. Now what we see that they are more into classrooms. They don't want to participate in physical activities. They are more into mobiles. They are more into the gamifications, or they want to be every time inside. So because there are health issues also, they have been 2 years inside inside their homes, in their comfort zones. और आजकल सभी के पास we have AC, पूरे घर में नहीं है तो एक घर में तभी भी AC है. So these kind of challenges we are seeing, and there is learning gap. How they were, taking classes online, so sometimes they were not properly sitting. So even now we have to tell them how to sit. वो normally एकदम casual they were जब post COVID में, before COVID, they were comfortably, अब नहीं मन है तो they were not attending classes. So that is a challenge, and I think after the 6-7 months we have all tried our level best, and they have to some extent now they are regaining that strength. Health issues जो थे वो भी reduce हो रहा है, and even the teachers उनका भी एक comfort वो बन गया था. They were 1 hour, 2 hours, and with all the digital tools were there which were supporting them, and now they have to be in a blended mode जिसमें आपको physical भी उनका exercise है और उनका digital भी there. So these are That's some right. I think yes changes. yes very rightly masked and pointed. I believe now changeover is a possibility, but skill development with review to classroom experience is now a priority. We have seen 2 years, probably it was, for some people, it was a new experience altogether. And now coming back to the classroom, it is with that habit which you are going to be imbibing with the march of time. Thank you, ma'am, very much. Now we have Mrs. Promini Chopra, ma'am, to discuss the issues on that ground. Over to you, ma'am. Thank you. Good evening, audience. I know it's very late and many of you must be wanting to have a cup of tea and push out, but we'll not take long. So in this pandemic time, I feel teachers have grown beyond what they would have grown in the next 10 years.
So when teachers have reached that stage, obviously, children were also not sitting at home, all of them doing nothing. So there is another aspect of children which has come to us, that there is a substantial part of children, substantial group of children who have found themselves and they have developed the capability of self-learning. They've become more conscious of their responsibility. And we've always maintained that till you are self-disciplined and you do things on your own, you cannot achieve anything. So inadvertently, the pandemic made children do just that. And on the other side, we always said that teachers have to be future ready without knowing how. So the pandemic pushed us into it, and the teachers are there. Now, the other aspect is that when we are talking of the present day classrooms, I feel many of the panelists before me have already spoken about values. So I feel that the present generation, their parents, they have to be approached with a lot of empathy, because the parent is also struggling at home. Reason, the parent cannot apply those traditional methods on the children. They have to change themselves. And for the parent to change, it's not easy, because the parent is only seeing 1 or 2 kids at home. We teachers are seeing so many of them, and we are feeling that the trend, we know more about the emerging trend. So we have to put the parents' restlessness at peace, emotional well-being of the teacher, the parent and the child. All 3 of them have to be taken care of the school if we want to implement anything new which is relevant to the coming times. Now, coming back to what is relevant for the coming times and how to bring about a change in the classrooms, as I said, first thing is take the parent, child and the teacher with you, take care of their emotional initiatives. They can give solutions to the school. So listen to them, get into student-led initiatives, ask them for solutions. They will come up with those solutions, try implementing them in the school. For example, when it comes to values, it is nice to create a simulation in the class. It can be through virtual reality. The child gets into that role, he's speaking with aliens, they are digital beings, but he's actually getting the real experience and applying it outside. So a lot of experiential learning has to be brought into the curriculum, and also a lot of values have to be woven into the system. Thank you so much. Thank you very much. I really appreciate. The blended deliberation which you made. You talked about augmented reality. You discussed about another aspects of bringing them in a simulated way. Yes, and I'm very sure with the vendors out here, I think a frequent visit to their stalls will also make it applicable and worth visiting this conference. Also, at the same time, we need to look forward how best we are going to be integrating the learning mindset in the class, because that goes without saying that all the parents are complaining now that my child doesn't listen to me. So here comes the very cake of how we are going to be enhancing their skills with a learning mindset among the students. Here comes another gentleman. We have academic resource person from Basic Education Department, Mr. Anurag Singh Rathore ji, to please discuss and throw some light on the challenges post-COVID within classrooms. Over to you, sir. Thank you. Thank you. सभी को नमस्कार. मैं बेसिक एजुकेशन में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पे काम कर रहा हूँ. तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर बेसिक एजुकेशन में जो हम लोगों ने फील किया, जो फेस किया और किस तरीके से अपग्रेड किया, उससे यहाँ पे सभागार में सभी लोगों को साझा करना चाहूँगा. जो हमारा 2 वर्ष का कोविड का काल था, उसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जो इक्विपमेंट्स थे, जो संसाधन थे, वहाँ पर उन लोगों के लिए हम लोगों से ज़्यादा आसान था उस कालखंड को बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए. पर हमारे पास ये समस्या थी कि हमारे जो बच्चे ग्रामीण एरिया में हैं, वहाँ पर जो हमारे आईसीटी के इक्विपमेंट्स हैं, आप मोबाइल की बात करें, आप इंटरनेट की बात करें, बहुत जगहों पर टीवी की बात करें, ये सब भी बहुत ही कम मात्रा में था. तो हम लोगों ने
ऐसे समय में जो भी संभव था उन सब को हम लोगों ने इनोवेट किया और उन सभी पे हम लोगों ने 2 साल काम किया। अब हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया, हम लोगों ने देखा कि गांव में किनके पास मोबाइल है, उसको कम्युनिटी मोबाइल बनाया। हम लोगों ने कम्युनिटी टीवी को यूज़ किया और दूरदर्शन के टाइम पीरियड को खरीदा और वहाँ पे हमारे टीचर्स ने प्रॉपर जो हमारा पाठ्यक्रम था उनके चैप्टर्स बनाए और उन पे प्रॉपर उनकी लर्निंग करी। हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो का टाइम स्पेन खरीदा और वहाँ पर हम लोगों ने उसको एज ए कम्युनिटी रेडियो को हम लोगों ने तैयार किया। देखा कि ये भी उतना कारगर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे बच्चे जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो उन तक प्रॉपर पहुंच नहीं पा रहा है। तो फिर हम लोगों ने उसको और इनरिच किया। यहाँ पर हम लोगों ने आईसीटी के साथ कम्युनिटी को जोड़ा। हम लोगों ने देखा कि उस गांव में ऐसे कौन से लोग हैं जो साक्षर हैं और गांव में रह के ही हम लोगों के बताए गए माध्यम से, बताए गए तरीके से, बताए गए पाठ्यक्रम को वो अपने और अपने आस पड़ोस के बच्चों को पहुंचा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। उसको हम लोगों ने प्रेरणा साथी का नाम दिया। उसके बाद हुआ कि ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, फिर हम लोगों ने वर्कशीट्स बनाई। ये हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन में पहली बार इस तरीके का जो है इनोवेशन हुआ था। प्राइवेट्स में बहुत होता है, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी वर्कशीट करता था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं था। हम लोगों ने जो वर्कशीट्स बनाई वो बहुत विशेष ध्यान रखा कि वो बच्चों के लर्निंग आउटकम से रिलेटेड हों और उन वर्कशीट्स का जो हम लोगों ने लेवल रखा वो एक क्लास पीछे का रखा। तो उसको बच्चों ने ईजिली टैकल किया, बच्चों ने उसको किया। फिर उस जो हमारे लर्निंग आउटकम्स भी उन्होंने वर्कशीट पे वर्क किया। उसके बाद जो हम लोगों ने नया इनोवेशन किया, क्योंकि बिल्कुल भी नई स्कूल बंद था, बच्चे नहीं आ रहे थे, लेकिन 1.5 साल बाद एक परमिशन हुई कि टीचर्स जा सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने मोहल्ला क्लासेस स्टार्ट किया। तो मोहल्ला क्लासेस में हम लोगों ने छोटे छोटे बैचेस बनाए। हमारे टीचर्स जाते थे, वर्कशीट्स ले जाते थे, बुक्स ले जाते थे और उनको पढ़ाते थे। यहाँ पर एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा पैनल के सामने कि हम लोगों ने जो ज़रूरत महसूस करी और आप लोग इसको आगे भी अप्लाई कर पाएंगे, सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को सहयोग और ज़रूरत मिली वो कम्युनिटी की मिली। कम्युनिटी के वो लोग जो एज ए पिलर हम लोग के साथ आए और उसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस थे। प्राइवेट कॉलेजेस ने हम लोग को सपोर्ट किया। उन्होंने हमको अपनी पुरानी बुक्स दी, हमें कॉपीज़ भी दी, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया और कम्युनिटी की हेल्प से एक जन आंदोलन बना पाए। और पूरे 2 साल में उस पूरे कोविड कालखंड में यद्यपि हम अपने सभी बच्चों को कक्षा अनुरूप दक्षता नहीं दे पा रहे थे, फिर भी हम बच्चों को शिक्षा से जोड़े रख पा रहे थे और जो बेसिक लाइन था, जो बेसिक लर्निंग जो हम लोग जिसको लक्ष्य बोलते हैं, वहाँ तक बच्चों को रख पा रहे थे। और इन सभी चीज़ों के सम्मिलित प्रयासों से ये 2 वर्ष का जो टाइम था हमारे बेसिक एजुकेशन में। आई थिंक इसके लिए इनको वी शुड गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आपने बहुत काम किया एंड आई थिंक सी द वे यू आर टेलिंग, that is really great, and the enthusiasm you have in presenting those facts talks and works like a testimony that you must have done a great job. So thank you very much. Now we have Mrs. Madhurama Srivastava ji, assistant teacher, upper primary school, Lucknow. Over to you, ma'am. Thank you, Time2Grow media. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी, सर ने बहुत कुछ बताया हमारे बेसिक डिपार्टमेंट के बारे में। मैं अपने छोटे छोटे एज अ टीचर अनुभव शेयर करना चाहूँगी, प्री कोविड, पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान क्या क्या हुआ। तो जब हमारा कोविड पीरियड था, उससे पहले भी मैं एक टीचर की तरह नहीं, स्कूल एक माँ की तरह ही जाती थी। और जब आप एक माँ की तरह घुसते हैं स्कूल में, तब सारी प्रॉब्लम मुझे लगता है अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि हम ये फिर नहीं सोचते ये मेरा सब्जेक्ट है या नहीं है, या मुझे अपना कोर्स पूरा करना है। पहले मुझे बच्चे को देखना है कि क्या वो प्रिपेयर है उस कोर्स के लिए, क्या वो तैयार है क्या। क्योंकि हमारे बच्चे कुछ ऐसे भी थे जो वेटर का भी काम करते थे, जो कुछ और भी चीज़ें करते थे, अपने खेत में भी काम करते हैं। तो हमें उनको भी देखना है कि क्या वो इतने थके हुए तो नहीं है, कि क्या हम उनको इस तरह की टीचिंग दे भी पाएंगे, क्या हमें वो जो आज हम लेसन प्लान तैयार करके आए क्या वो एडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने हमेशा ये सोचा। और एक अगर हम एज ए इंसान अपना देखें, तो अगर हमें भगवान को खुश करना है, तो अगर बच्चों के आंखों में चमक और उनके चेहरे पे मुस्कान है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भगवान उसी से खुश होंगे। तो वो चीज़ में मुझे हमेशा से इंस्पायर करती रही कि मुझे भगवान को खुश करना है। तो इसलिए मुझे कोविड काल में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, इसलिए क्योंकि बच्चे और कम्युनिटी मुझसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। तो जब कोविड काल आया, तो जब हम जा ही नहीं पा रहे थे स्कूल, तो हम लोगों ने प्रेरणा साथी के लिए, जैसा कि सर ने बताया
प्रेरणा साथी, तो मेरे वहाँ 12 बच्चे अपने आप ही खुद, जो कि हमारे स्कूल से निकल चुके थे, 15 साल के ऊपर थे, उन्होंने कहा कि मैम हम आपके साथ जुड़ेंगे। और मैंने कहा ठीक है आप लोग जुड़ो। हमने खुद अपने आप से कुदाल वदाल चला के और पूरी हम लोगों ने लैब बनाई थी, बॉटेनिकल गार्डन बनाया अपने स्कूल में। उन्होंने कहा हम उसकी भी देखभाल करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि मेरे पौधे सूख जाएंगे, उनका क्या होगा। उन्होंने सब कुछ संभाला उस टाइम में, और जाके वो फ़ोटो खींच के भेजते थे, क्योंकि वो हमारे लोग के पढ़े हुए थे, तो उन्हें पता था कि हमारा टीचिंग मेथड क्या है। उन्होंने वो अडॉप्ट किया, हमने उन्हें ट्रेन किया, उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया। फिर जब हम लोगों को जाने को मिला तो मैंने मोहल्ला क्लास में, वो प्रेरणा साथी तब भी मेरे साथ जाते थे, सैनिटाइज़ कराना बच्चों को, उनको किस तरह से प्रॉपर बिठाना है, वो सब हमारे साथ करते थे। और जब थैंक्स टू बेसिक डिपार्टमेंट एंड डीजी सर, जब हमारा जो मोहल्ला क्लासेस में 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन चला ताकि बच्चों की स्किल्स को बढ़ाया जा सके, तो मैंने भी सोचा कि बच्चे कहानी दूसरों की पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो बच्चों ऐसा करते हैं, हम कहानी खुद क्यों ना लिखें और हमारी कहानी भी दुनिया पढ़े। तो बच्चों को मैंने थोड़ा सा ट्रेन किया, और ये हमारे सामने है। ये मुझे बुक, मैंने बहुत सी बुक लिखी हैं, 8 बुक लिखी हैं, लेकिन ये बुक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बच्चों ने लिखी है। वंडरफुल वंडरफुल। ये है निपुण भारत, जो हम कह सकते हैं कोविड के दौरान, ये बच्चों की किताब है जिसमें कि 16 स्टोरीज हैं जो बच्चों ने लिखी हैं, उसको पिक्चराइज भी बच्चों ने ही किया है। वेरी गुड। और एज अ कॉमिक बुक भी कह सकते हैं। सो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, और सबकी तरफ से आपको बधाई देते हैं। तो प्लीज मैम के लिए आप लोग ताली बजाइए, और जो होनहार काम किया है। ये बच्चों की आंखों की चमक आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। इसके साथ ही हम लोगों ने फिर एक प्लान बनाया, बच्चों के साथ मैंने मैथमेटिक्स के और साइंस के खिलौने बनाए। बहुत सारे खिलौने हैं मेरे वहाँ, बहुत बड़ी लैब है जो कबाड़ से बनी हुई है। साइंस है, मैथ्स है, जनरल नॉलेज वॉल है, इंग्लिश वॉल है, पूरा स्कूल भरा है, इतना भरा हुआ है कि हमें घर पर भी एक कमरा, पूरा लैब मेरी बनी हुई है कबाड़ से। सो वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम मैम, सो सॉरी अबाउट दैट। Thank you very much, and congratulations for all the great job you have done. And now I would switch over to Mrs. 𝗟𝗶𝗸𝗲. She is the GM Academics at St. Anandam Jaipuriya School in Ghaziabad. Over to you, ma'am. Thank you, sir. Good evening, everyone. We are talking of technology and inculcating technology. I want to say how much is too much of technology. If technology was there and we could do a lot of things, then why did we have learning gaps at all? We shouldn't have had that. So when we talk of this, of course, we have to change with times, because change is the only constant thing we have. But how much to inculcate and how much not to is what we have to think as teachers, as principals of schools, or whatever we say. How do we design, even when they are talking, because they didn't have that technology with them, we had. And it was not easy for us also, even when we had teachers who were aware of the ICT, but they could not implement so many things. So with that, a very big thing came was creativity, because every teacher tried to be different in some way or the other to reach to the students. So there was a lot of development in creativity also. So if we talk of COVID, COVID taught us to be more creative, because at home they didn't have so many things. So whatever, and even the children became more creative. What ma'am said, that they get ideas and do things, there also they try to do things with the least or whatever they had, or as she said that they could do so much out of waste. So they did that. Then we come to the pedagogy which we are teaching. See, pedagogy is the science and art of learning. So it's how we make use of it. Now that pedagogy has to reach to the child, the needs of the child, the competency of the child. Then only we'll be able to do something. If you're not reaching the right place, we will not have things happening. So there are so many things, and again we come to curriculum. Curriculum again is defined age-wise. It may vary from stages, or may, because of the demographic differences, there are certain differences which we do see, but by and large we follow the same curriculum. So now we have to be future ready. And when we are talking of technology and future ready, are we going to have robots teaching the children? Next 10 years, who's going to be teaching? If it is technology and children become so tech savvy, will we have robots teaching, or we will still need human teachers? We have to think on that also. So as we move ahead, there are a lot of questions to be there, and unanswered questions.
do we, or are we going to do away with technology? Because we talk of gadget detoxification today. The children are too much with the gadgets, so we detoxify them for that. So it's a mix, this thing, where we go, which is, and how much is too much, again, we Very have to true. understand. Well, So well. I think I end this here. Yeah. You talked about the probability of robotics implementing the teaching, and yes, that is actually in a way happening unconsciously. We have been using the AI-based devices to learn, and the other day, if I ask Alexa a particular theory and things, so it is actually unconsciously happening. But the teachers need to be more robotic in sense of knowledge friendly, and for that particular aspect has to be only delivered, because children look for a replacement of Google in their teachers, and henceforth teachers learning is a requisite. Not training, but learning, because learning is somewhat like children love to recognize you as their Google substitute, and also in hand looks forward to the very preface of knowledge delivery in the classroom. And they can't bear saying or listening, this is not in your course. Instead, they should come out with solution or the other. Well, thank you very much, ma'am. Now we move to Rajiv Kumar Singh ji to take over. Yeah, please. हाँ सर, नमस्कार। मैं राजीव कुमार सिंह, स्टेट रिसोर्स ग्रुप का मेंबर हूँ, लेकिन वाराणसी से हूँ, वहाँ गलती से लखनऊ लिख गया था। कोई बात नहीं। हाँ, जैसा कि सर का क्वेश्चन था कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद जो है हमारे शिक्षण में कौन सी टेक्नोलॉजी इत्यादि का इस्तेमाल हुआ। हमारे ARP साथी ने बता दिया कि कोविड के दौरान जो इन्होंने प्रयास किया, कमोबेश पूरे प्रदेश में हमारे सारे शिक्षकों ने किया। वही मोहल्ला क्लासेस थे, टीचरों ने अपनी जान की हथेली पर, जब कोविड के वेब चल रही थी तो वो घरों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे और वर्कशीट के द्वारा और तमाम तरह बच्चों को इंगेज करने का काम किया। हमारे पास डिवाइसेस सर कम थे, लेकिन हम लोगों ने उस समय पूरी जान लगा करके प्रयास किया था कि हर बच्चे को शिक्षा से इंगेज करें। नहीं पूरी स्थिति ला सकते हैं तो कम से कम उनको किसी शिक्षा के गतिविधि से इंगेज करने का हमारा टास्क था। इसके लिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी की से लिया, वहाँ के प्रधान जी के सहयोग लिया। हमारे यहाँ सेवापुरी प्रधानमंत्री जी का एक आदर्श गोद लिया हुआ ब्लॉक है, तो वहाँ युवा पथिक और बाल पथिक हम लोगों ने छोटे बच्चों और उस तरह के बच्चों को भी वहाँ पर एज ए वॉलंटियर यूज किया था। अब रही बात कि पोस्ट कोविड सेशन के बाद की स्थिति क्या है, हम किस तरह से बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें मेरा ये कहना है कि 2 सालों में बच्चों का केवल लर्निंग लॉस ही नहीं हुआ है, बहुत कुछ लॉस उन्होंने माँ बाप को खोया है, उनकी भावनात्मक और सामाजिक भावनाएं भी बहुत आहत हुई हैं। तो हमारे यहाँ इस समय बहुत प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों और स्कूल के बीच में ऐसा संबंध जो पहले था वो स्थापित हो, क्योंकि बच्चे केवल टीचर से नहीं सीखते हैं, बच्चे बच्चों से सीखते हैं, क्लासरूम से सीखते हैं, बिल्डिंग से सीखते हैं। हमारे यहाँ देखिए बिल्डिंग को एज ए लर्निंग एड बाला के रूप में यूज किया जा रहा है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, तो उसके रूप में भी वो सब चीज़ें लॉस हुई है। उसको जोड़ने के लिए फिलहाल हम लोग इस समय एक अभियान चला रहे हैं, शिक्षक और बच्चों के बीच में आत्मीय संबंध कैंपेन। इससे पहले हम लोगों ने अपने प्रेरणा पोर्टल पर सोशल इमोशनल गतिविधियों को डाला था, ताकि बच्चे को के बीच में जो एक संबंध लॉस हो गया था, क्योंकि बच्चा तभी सीख पाता है जब टीचर से उसका अंतर संबंध स्थापित होता है। हमारे यहाँ सर बहुत सारी इस समय हम लोगों ने 22 सप्ताह की कार्य योजना बनाई है, जिसमें हम लोगों ने भाषा और गणित पे काफ़ी फोकस किया है। उसमें हम लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को फोकस किया है, TLM का इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ प्रदेश से 37 प्रकार के कुल 102 प्रिंट रिच मटेरियल भेजे गए थे, जो क्लास 1, 2, 3 में लगाए गए थे। चूँकि अभी रोबोटिक्स की बात चल रही थी, तो मेरा ये कहना है कि छोटे कक्षा में रोबोटिक्स टीचर का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। बड़ी क्लास में गूगल हुआ, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, यहाँ तो टीचर बच्चों से जो स्नेह वात्सल्य देता है, बच्चा उससे सीखता है, वो अब बिना मानव के संभव नहीं है। हमारे दक्षिण में कोई एक प्रोफेसर साहब हैं, वो शायद रोबोट से पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ये सुनने में आ रहा है कि टीचर का सब्स्टिट्यूट रोबोट्स नहीं हो सकता है सर। तो हम प्रिंट रिच के द्वारा भी सर
लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, हम साइंस पे काम कर रहे हैं, हम साइंस के लिए भी गतिविधि आधारित लर्निंग बाय डूइंग और प्रैक्टिकल हम साइंस लैब स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो नई तकनीकी है, चूंकि हमारी जो पुरानी पद्धति थी सर हमारे यहाँ बेसिक में, वो चाक एंड टाक की थी, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, प्रश्नोत्तर लिखवाना, किताब से पढ़ाना, टीचर यही कर पाता था, संसाधन की कमी थी। लेकिन अब हमारे आदरणीय महानिदेशक महोदय के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, खास करके 19 पैरामीटर पर, हमारे यहाँ 26 पैरामीटर भी लागू हुआ है, उसमें हम लोगों ने साइंस लैब इत्यादि को भी फोकस किया है कि ताकि ये संसाधन जो सीखने सिखाने में बच्चों को मदद करती हैं, क्योंकि बिना साइंस और मैथ जैसी चीज़ बिना इक्विपमेंट के या बिना उसके किट के नहीं हो सकता है। तो उससे हम अपने टीचरों को, हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल मतलब संस्थाएं हैं, मदद कर रही हैं, कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, वो अपने CSIR फंड से हम लोगों को स्मार्ट क्लासेस, लगभग 550 से ज्यादा स्मार्ट क्लासेस हमारे यहाँ अब तो शायद 800 के करीब हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कुमार सिंह जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आप जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आई थिंक इट इज वन वे यू आर इम्प्लीमेंटिंग NEP. So I think he deserves another round of applause for the wonderful work these people are doing and representing. We are so happy to know कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग CBSE वाले इतना नहीं कर पा रहे हैं। चाहता हूं कि आई थिंक जो आपने टर्मिनोलॉजी सरकारी डॉक्टरों ने रोल अदा किया, तो उससे कम हमारा रोल नहीं था। हमने ड्यूटी नहीं किया, पढ़ाया नहीं, हम लोगों ने लोगों को जान बचाने के लिए भी ड्यूटी दिया। रेलवे स्टेशन, अस्पतालों में, कोविड सेंटर में आज भी देते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद सर। आई रियली अप्रिशिएट योर deliberation and the sharing which you have had. Thank you very much. Now, finally, I would request Mr. 𝗙𝗶𝗸𝗲, CEO and Director, KidX, to kindly put forward his views. Over to you. Thank you, sir. Delighted to hear from my fellow panelists over here. मैं कुछ नई बात नहीं कहना चाहूँगा, शायद सब पैनलिस्ट ने जो बात कही है उसी में कुछ पहलू हाईलाइट करना चाहूँगा। स्कूल और टीचर इररिप्लेसेबल है। बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट स्कूल और टीचर के बिना नहीं हो सकती। आई थिंक हम सब पैनलिस्ट ने एक ही बात बोली है। पर टेक्नोलॉजी स्कूल और टीचर से अलग नहीं है। अगर स्कूल के पास, टीचर के पास ब्लैक बोर्ड है, बुक है, पेंसिल है, पेन है, वैसे ही उनके पास टेक्नोलॉजी है। उन्हें ये निर्णय करना है कि कौन से पहलू के लिए टेक्नोलॉजी बेहतर है, कौन सी पहलू के लिए हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स अभी भी बेटर हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स बेटर होने का रीजन सिर्फ ये नहीं है कि वो बेहतर है या टेक्नोलॉजी कमजोर है। उसका एक रीजन ये भी है कि हम लोग जो आज माता पिता हैं, हम लोग पिछले 30 साल से जो सिस्टम देखते आए हैं, समझते आए हैं, जिसको हमने जिया है, ओवरनाइट हमारी सोच नहीं बदल सकती। एक बच्चा जो 6 साल का है या 10 साल का है या 12 साल का है, अगर वो स्कूल में एक बात सुने और घर पे दूसरी बात सुने, वो बच्चा इतना छोटा है कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। और इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि इकोसिस्टम एक बैलेंस में रहे और उसमें टेक्नोलॉजी कुछ कुछ पहलू पे आज एक अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उसे हमें अपनाना चाहिए और इसीलिए सरकार स्मार्ट स्कूल्स बना रही है। अगर हम ये बोलते कि टीचिंग टेक्नोलॉजी के बिना हो सकती है, तो फिर हम क्यों टैक्स पेयर्स का पैसा डाल के स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं? हम क्यों टैब दे रहे हैं स्कूल में? ब्लैक बोर्ड भिजवाते हैं ना। हम कह रहे हैं दोनों चीज़ों के फायदे हैं, हमें चीज़ों को बैलेंस्ड मैनर में लेकर चलना है। और जो मॉडरेटर सर ने डिस्कशन स्टार्ट किया था कि बच्चे में लर्निंग माइंडसेट कैसे डेवलप करें, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा मेरी बात सुन नहीं रहा है। हमने पिछले 2 साल में बच्चे को एक अलग एक्सपोजर दिया है जो शायद उसको जिंदगी में 10 से 12 साल पहले मिल गया है। अब हम उसको वापस बोल रहे हैं कि तुम उसको त्याग के वापस पुराने तौर तरीके में 100% लौट जाओ।
उसमें वो कह रहा है मेरे मुंह में एक अजब चीज का स्वाद आ गया है, मैं उसको पूरा क्यों त्यागूं? तो वहां पे हमारे लिए जरूरी है हम बैलेंस ढूंढे। वो बैलेंस 70% ट्रेडिशनल है, 30% टेक्नोलॉजी है, या इट्स द अदर वे राउंड? दैट इज all the leaders, the government, the academicians to decide. But technology is just one more tool for school and teachers. It is not their substitute. It can never be. Thank you, sir. Thank you. Thank you so very much. And I finally agree with you saying that yes, technology can go hand in hand, but the presence of the teacher is an expertise, has to be there, governed well with you, the leaders of the school, managing the school so effectively. So we look forward to be a bright future ahead for our students and so for our wonderful teachers. Thank you very much. Thank you all the panelists, and over to you, ma'am. Thank you, everyone. A big round of applause for our esteemed panelists for sharing their valuable knowledge and ideas with us on the topic. I would like to welcome on stage Mr. Manmeet Khurana to felicitate our amazing panel members. We begin with Ms. Shalini Tiwari, Principal, St. Xavier Convent School, Lucknow. Ritu Singh, Principal, G.D. Goenka Public School, Panipat. Hema Kalakoti, Principal, APS Academy, Lucknow. Brijesh Kumar Pathak, Principal, Bansraj Memorial Sunrise Public School, Sahganj, Jaunpur. Not there. Promini Chopra, Principal, 𝗟𝗶𝗸𝗲 Jaipuriya School, Gomti Nagar. Anurag Singh Rathore, Academic Resource Person, Basic Education Department. Madhurima Srivastav, Assistant Teacher, Upper Primary School, शीतलपुरवा BKT लखनऊ. आरती अवस्थी, GM Academic, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गाजियाबाद. राजीव कुमार सिंह, State Resource Group Member, UP Basic Education, वाराणसी. Kapish Saraf, CEO and Director, KidX. So this brings... And finally, our lovely moderator, Dr. Dheeraj Mehrotra. Thank you for moderating the session so well. So this brings us to the end of the panel discussion scheduled for the day. I'm sure we all have multiple takeaways to implement from the discussions and brainstormings that we have witnessed today. It was indeed an exhilarating experience for all of us to learn from the best minds of the industry.